गुड इवनिंग बेटा। कहाँ तक पहुंची प्रिपरेशन? स्माइल। Yes, sir. How you feeling? 2 days left out. Exciting? नर्वस हो रहा है या कूल हो? हाँ, पेपर इजी रहेगा बेटा, डोंट टेक टेंशन। जो आप पढ़े हो आप ही के लेवल का ही होगा, बट थोड़ा सा सिस्टमेटिकली रिवीजन पे अच्छा खासा कंसंट्रेशन कर लो, दैट विल हेल्प इट आउट। डोंट एक्सपेक्ट कि पेपर एकदम बुरा जाएगा। ऑब्वियसली पेपर विल बी विद इन योर बाउंड्रीज, बट आपको जैसा मैंने गेम सिखाया कि करना, पेपर कैसा है फिजिक्स में, एक 80 मार्क्स 100 मार्क्स का गेम सेफली खेल लो। उसके बाद अगर टाइम मिला तो देन रिमेनिंग क्वेश्चंस पे कंसंट्रेशन कर लो, बट डोंट बी वेरी एक्साइटेड और वेरी ओवर एम्बिशियस कि मुझे पूरा करके आना है। बायो मैक्सिमम कर लो, यू 360 ट्राई कर सकते हो। केमिस्ट्री यू कैन ट्राई फॉर 140 160 120 140 जो भी है आपका हिसाब से। फिजिक्स में जस्ट मेक श्योर दैट यू सेव द टाइम इन योर बायो एंड कम, एंड थोड़ा ज्यादा टाइम आप फिजिक्स को दो और मेक श्योर दैट यू कैन डू गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। 25 तो किसी हाल में भी करके आना है, ये दिमाग में रख लो। तो उसके लिए जो चैप्टर्स अपने प्रिपेयर हुए थे उसका एक बार अच्छे खासा रिवीजन कर लो, एंड फॉर्मलेस अच्छा खासा रिवीजन कर लो, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ। एक बार बैठे बैठे ही पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को रिवीजन कर लिए, पूरा साउंड रिवीजन कर लिए, isn't it? So it will help you out basically. Alhamdulillah, paper will be very simple. You can do it out really very good. और बायो पे मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश कर लो। फिजिक्स तो आराम से आप 20-25 क्वेश्चन तो वैसे भी कर लोगे टाइम स्लॉट ऑफ 30-40 मिनट्स के अंदर। बस यही देखना है कि पेपर अगर इजी है तो और एक 5-6 क्वेश्चन ज्यादा कर लो, लेकिन उससे ज्यादा भी नहीं, isn't it? If you are done with all good chapters then fine. नहीं बोले तो if you are in the comfortable zone, मुझे 100-120 आ गए तो भी काफी है, then always try to revise the chapters which you have done comfortably. चलो पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ लो एक बार बेटा जल्दी से। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी आपको 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, मैं कभी भी आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का तरीका बताया था कि जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिले, so make sure that you try to read the question paper completely and try to justify and think the questions which you can do it out. Okay, so let us try to study the question paper and see what are the questions you can do it out. चलो आराम से करो बेटा, सभी लोग एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पेपर करने की कोशिश करो। फुरखान आप भी आराम से पहले क्वेश्चन टिक कर लो जो आपको करने आते हैं, क्योंकि साल भर पूरी अपनी कोचिंग ली है और मैंने आप लोग को थोड़े चैप्टर्स बोले थे, ये चैप्टर्स ही खत्म करना है, उसके बाद देख लेते हैं। चलो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन तो सभी लोग ट्राई कर सकते हैं बेसिकली। सेकंड वन काइनेमेटिक्स का है, तो आई एम नॉट टेलिंग दैट यू कैन नहीं करना है, लेकिन यू कैन डू इट एट लेटर। Then question number 3 is also kinematics. Question number 4 is also kinematics. 5 is also kinematics. 6 is your shell यानी collision का है दिख रहा है। Question number 7 is rotation. Question number 8 is also center of mass. And question number 9 देखो, even heat or energies of electron in the second and third, ये modern physics का question दिख रहा है, तो we can do this one. Question number 10 is an Young's double slit experiment का question, शायद वो अपन भी कर सकते हैं। Then impulse का है, then we'll come back, then car velocity window, then question number 13 शायद अपन कर सकते हैं। Question number 14 शायद अपन कर सकते हैं। Stopping potential ये करा हुआ दिख रहा है, तो 15 भी कर सकते हैं। Then question number 16 certain amount of heat energy, शायद ये भी अपन ट्राई कर सकते हैं बेसिकली। रेक्टेंगुलर फ्लेम ऑफ वर्क डन सरफेस टेंशन का है, तो सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला क्वेश्चन है, शायद वो कर सकते हैं अपन। कैलकुलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ये भी कर सकते हैं। देन बाइस ऑफ मटेरियल्स, ये तो इलास्टिसिटी का, ये भी कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय टू मेटालिक स्फीयर्स, ये भी कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 21 फॉर ए गिवन गैस, ये भी कर सकते हैं, शायद मुझे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जैसे दिख रहा है क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब आई एम टेकिंग कि मैंने चैप्टर्स किए तो इसमें से मुझे क्वेश्चंस कंसियाल में भी करना है। 22 23 24 25 एंड 26 से शायद में रिलैक्सेशन टाइम ऑफ कोलिजन कहीं पर पड़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, शायद ये मैं ट्राई कर सकता हूँ बेसिकली, isn't it? चलिए
And question number 26 magnetism है, 27 is your magnetism, 28 is your capacitors, 29 is right now moon is observed astronomical telescopes अपन करे थे, शायद वो ट्राई कर सकते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 30 कोहेरेंट एंड कोहेरेंस का शायद ये भी ट्राई कर सकते हैं. फोटोसेल कन्वर्ट्स ये भी ट्राई कर सकते हैं. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ये भी ट्राई कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स ऑफ एनर्जी बैंड्स ये भी कर सकते हैं. पावर ऑफ वाटर ये बाद में कर लेंगे. 35 भी विल कम बैक. 36 में देखो द इनिशियल टेंशन स्ट्रेच हैव द स्पीड द ट्रांसवर्स वेव्स ये भी बाद में कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 37 इसमें ट्राई कर सकते हैं. 38 is SHM, 39 is electric field, 40 is electrostatics, 41 is electrostatics, 42 is electrostatics with your RC circuit का problem है. Then 43, then moving coil galvanometer, then 45 is EMI, 46 is AC, 47 is your ray optics, 48 is your YDSE, then 49 is your radioactivity, and 50 is your again modern physical machine. Done. Done. Yes sir. चलिए अब आराम से आप क्वेश्चन पेपर पढ़िए, अभी टेंशन लेना नहीं है. आप पहले क्वेश्चंस देख लीजिए हम लोग ने कितने सेलेक्ट किए हुए हैं. लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव सेलेक्टेड. सो एटलीस्ट ट्राई टू सी दैट हम लोग मैक्सिमम कर सके. क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन 1 2 3 then 4 5 6 7 8 9 10 11 12 then 13 14 15 16 17 18 19 then 20 21 22. Literally 22 क्वेश्चंस अपन ने सेलेक्ट कर लिए into 4. कितने मार्क्स है बेटा? 88 मार्क्स अपन को भी करना है. ठीक है. I hope everyone has been in. I have removed. चलिए अब क्वेश्चन पेपर करिए. आप लोग करते जाइए. आई एम नॉट डूइंग द क्वेश्चन पेपर. आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई एम देयर विथ यू. जैसा आप सब हो सकता है वैसा बोलते चलिए. चलो क्वेश्चन पेपर 1 कर लीजिए. कीप द आंसर्स विथ योरसेल्फ ओनली. डोंट ट्राई टू डिस्क्लोज. जस्ट गिव द टाइम ऑफ 1 मिनट एंड ट्राई टू डू इट. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेन मैं खुद भी कर ले रहा हूं, तो आप लोग भी मेरे साथ कर लीजिए एंड राइट योर आंसर्स ऑन योर ओन. आंसर्स मत दीजिए बेटा, आप लोग अपने बुक में लिख लीजिए एंड क्रॉस चेक कीजिए आप कितने आ रहे हैं बेसिकली और कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आराम से कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है. फॉर्मूला याद आना है. अरे ये मैंने पढ़ा है, याद है, वो अलग बात है. 9 एंड 10 आपको आता है. फॉर्मूला रिकलेक्ट करो और करके बाजू रख लो. डोंट रेफर एनी मटेरियल और एनी नोट्स और एनी फॉर्मूले. recollect on your own and try to see how far you are able to do it out. If everyone is done, just chart it as done. We'll go for the next question. 9 and 10 करना है आप लोग. सर 50 क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन लेना सर, सेकंड ऑप्शन लेना. कौन सा? 50th. 50th है. ये सर 50. हम्म. फर्स्ट ऑप्शन लेना सर, सेकंड ऑप्शन लेना. क्यों?
ये मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी में पॉजिटिव रहती है। तो वो देखनी है ना बेटा, आप लिख के तो रख लो, आप देखनी है फिर वो क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन लिख लीजिए बेटा। दिस इज 1:4 है, दिस इज 9:4, दिस इज 4:9 है, दिस 16:9। 1:4 and this one is 4:9. तो 9, 9, 10 कर लीजिए। वैसे भी मैंने आप लोग को पेपर ग्रुप में भी डाला है, तो if you're comfortable with your mobile in front of you also you can do it all। और जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर लेके अगर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कर लीजिए। 13, 14, 15। 13, 14, 15।
Okay, बेटा 13, 14, 15. Done. थर्टीन 14 15 भी कर लीजिए. Done. क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19. 1 मिनट से ज्यादा नहीं लेना. 19, 20, 21.
Okay, sure, very good. Question number 25, 29, 30. Then better. Sure. Question number 31, 32, 33. $37 पे कर लीजिए बेटा. 31, 32, 33, 37. $48, 49, 50.
चलो, so I hope everyone has been written their answers. चलो पेपर डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से. फर्स्ट वन देखो बेटा, the dimension formula for the strain, ये तो आप आंख मुझ के बोल सकते हो. Strain is nothing but what बेटा, change in length by original length. So no dimensions and no units. So what will be the answer? M0, L0, T0. Very good. Fourth will be the answer for that one. Then next question क्या कर रहे थे हम लोग? Ninth question. Ninth question देख लीजिए बेटा, क्या दे रखा? E2 and E3 be the energies of an electron in the second and third excited state. मतलब N is equals to 1 ground state, N is equals to 2 first excited state, N is equals to 3 second excited state. A ground state है, a first excited state, a second excited state. E2 and E3s are the energies of electron in the second and third excited state. यानी first, second और ये third होना चाहिए. N is equals to 4. This is your third excited state T. ठीक है ना? Okay. According to the Bohr's model of an atom, the ratio of E2 by E1 will be equal to how much? चलो, energy का formula क्या बेटा? E is equals to, isn't it? Minus 13.6 into your Z square divided by N square. ठीक है ना? तो वैसे भी energies वो cancel हो जाएंगे. So if I'm writing the energies of E2 divided by E3, so that will be equal to your hydrogen-like atom, so it will be equal to 1, and N will be equal to your 2 के लिए कितना हो जाएगा बेटा? Third excited state. मतलब this will be equal to your second and third excited state बोल रहा है. Second excited state मतलब 3 square divided by, this one will be equal to for me how much? 1 by 4 square. So this value will become for me 4 square divided by 3 square. That is 16 divided by 9. 16 is to 1. Fourth option. Very good. हो गया? चलो. 10th one देख लीजिए बेटा. In Young's double slit experiment, if there is no initial phase difference between the light from the two slits, then the point on the screen corresponding to the fourth minima has the phase difference. मिनिमा और मैक्सिमा का फॉर्मूला बताइए बेटा. मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. मिनिमा के लिए फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू यूर लैम्डा बाई 2. एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? एन की वैल्यू 1 2 3 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर एन की वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट होगी, isn't it? Now he is asking the fourth minima. For the fourth minima, if I'm writing delta x will be equal to x, delta x is equals to 2 into 4 minus 1 into lambda by 2. 2 4 is 8, 8 minus 1 is 7. There is 7 lambda divided by 2. Am I clear? Third option. Very good. Sure. Question number 13 देख लीजिए. In the given nuclear reaction, the element X is LHS or RHS के atomic numbers और mass numbers को equate कर लीजिए. This one is right now Fermi electron and this one is an antineutrino. In the given nuclear reaction, the element X will be equal to how much? This is a sodium 11th element with a mass number of your 22, isn't it? So यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए, because 12 minus 1 will be equal to your 11. यानी ये 12th element होना चाहिए. And mass number will be equal to, यहाँ पर same होना चाहिए 22. This is तो antiparticle है. तो 12th element मतलब कौन सा हो जाएगा बेटा? Magnesium. Fourth option will be the answer. Direct question. Chemistry का question here related. Very good. Question number 14. Following diagram performs the logic function. First one is NAND gate. Next one is NOT gate. तो इसका इनपुट और इसका इनपुट A and B क्या हो जाएगा बेटा? पहले बताइए. कोई बताएगा इसका इनपुट NAND गेट का? इसका आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा? Y dash will be equal to your A bar plus B bar. A bar plus B bar. A bar प्लस है कि वो है? ब्रेक कर लेना. हाँ, ब्रेक कर ले तो क्या हो जाएगा? A bar plus B bar. तो मैं इसको मिला के भी लिख सकता हूँ ना पूरा? यस सर. तो ये हो गया A B बार. इसका आउटपुट विल बी इक्वल टू मच बेटा? YD डैश बार. हाँ, that मतलब this will be your AB double bar.
that means that will be equal to your AB. So कौन सा गेट बन गया? A dot B मतलब कौन सा गेट बेटा? AND गेट आ गया? Yes sir, आ गया. चलिए 2015. The stopping potentials are V1 and V2 with incident light of wavelength lambda1 and lambda2. The difference V1 minus V2 will be equal to how much? Directly stopping potential का formula, Einstein's photoelectric equation. Energy is equals to work function plus stopping potential E into V. तो फर्स्ट वाले के लिए लिख रहा हूं मैं in terms of wavelength. Lambda1 and lambda2 are the incident light. यानी E is equals to HSE divided by lambda1 is equals to, this will be equal to your यहाँ पर work function हो जाएगा plus E into V1. उसके बाद next equation है, that is HSE divided by lambda2 is equals to work function plus E into your V2, isn't it? So E into V1 निकाल लीजिए, इसमें से E into your V1 will be equal to HSE divided by lambda1 minus of your work function. इसी में से EV2 is equals to HSE by lambda2 minus of your work function. Am I clear? Am I clear? Yes sir, clear. तो अब इन दोनों की इक्वेट कर लीजिए, all the potentials एक जगह ले लीजिए, it is E into V1 minus of V2 is equals to, this one is right now HSE common, it is 1 by lambda1 minus 1 by lambda2. Done? Subtract कर रहा हूँ बेसिक, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, isn't it? तो वर्क फंक्शन वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, so कितना बनेगा? V1 minus V2 is equals to HSE divided by E into 1 by lambda1 minus 1 by lambda2. So what is the answer? HSE by E 1 by lambda1 minus 1 by lambda2. Second question. आया सभी को? Very good. Question number 16. A certain amount of heat energy is supplied to a diatomic ideal gas which expands at a constant pressure. Pressure is constant. Isobaric. The fraction of the heat energy converted into the work will be equal to your how much? इसका direct formula था. Fraction of the heat energy converted into the work done will be equal to your how much work? Fraction of your heat energy मतलब delta W divided by delta Q. Isn't it? Delta Q मतलब क्या हो जाएगा बेटा? From the first law of thermodynamics, dQ is equals to du plus dW. So dW will be equal to how much Fermi? dQ minus of your dW. So dW निकालना हम लोग. So it is dQ minus of du. Done. So dQ is equals to N into Cp into delta T minus this is always N into Cv into delta T. Internal energy will always be the same. So delta U का formula लिख दो, simplify कर लो. So what I am getting right now you see N into Cp into delta T minus N into Cv into delta T divided by delta Q. Isn't it? Or dQ. dQ will be equal to how much better? N into your Cp into your delta T. So everywhere N delta theta N into delta theta will get cancelled. So it is Cp minus Cv divided by Cp. यानी this value will become for me 1 minus Cv divided by Cp. यानी कितना हो जाएगा? 1 minus Cp by Cv. 1 minus ये हो गया Cv by Cp. So this value will become for me 1 minus 1 by gamma. Gamma is equals to Cp by Cv. What type of a gas it is better? Diatomic gas. So it will be equal to how much for me? 1 minus 1 by, this will be equal to your 7 by 5. So it is 1 minus 5 by 7. So that will be equal to 2 by 7. आ गया? Am I clear? So directly you can remember the shortcut. The fraction of heat energy converted into work मतलब this will be equal to your 1 minus 1 by gamma. ये पूरा करने की जरूरत नहीं रही. चलिए. Sir, हाँ. for isobaric. आइसो Constant pressure sir. हाँ ये तो कांस्टेंट प्रेशर है ना बेटा. कांस्टेंट प्रेशर में फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क बोल रहा है.
यानी फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क, यानी dW by dQ। dW मतलब क्या हो जाएगा बेटा? certain amount of heat energy is supplied to diatomic gas. When you are supplying certain amount of heat energy, what is happening to its energy? It has been expanding at a constant pressure. So first law of thermodynamics apply किया मैंने, dQ is equals to du plus dW। तो कितना वर्क डन कर रहे हो? dQ minus du। Internal energy is always n into Cv into dt। No sir, this shortcut 1 minus 1 by gamma। हाँ, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है फॉर द कांस्टेंट प्रेशर। डन। चलिए 17th one, question number 17th one। A rectangular film is extended from 10 centimeter into 20 centimeter to 20 centimeter into 10 centimeter, and area is equals to length into breadth। The work done in the process is given for me 5 into 10 power minus 3, then the value of surface tension will be equal to how much? याद है work done, surface tension is also equal to work done divided by change in area। Is asking the value of what? Surface tension। So T is equals to W divided by delta A। डेल्टा ए मतलब क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा ए मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया, दिस इज टोटली, दिस इज योर इनिशियल एरिया A1 एंड दिस वन इज योर फाइनल एरिया। दिस इज राइट नाउ फॉर मी A2। कितना आ रहा देख लीजिए बेटा, एरिया कितना आ रहा बताइए? ये कौन सा है? रेक्टेंगुलर फिल्म इज एक्सटेंडेड, द वर्क डन इन द प्रोसेस, द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल टू हाउ मच वर्क? फिल्म बोला है मतलब सोप सॉल्यूशन, it has two surfaces, so इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना अब इसका। डन। so delta A will be equal to your 2 into, this is 20 into 25 minus this will be 10 into 20, और इस सेंटीमीटर्स में है तो 10 पावर माइनस 4 का केयर कर लीजिए। Okay, that will give me change in area। So whatever you get the change in area, that you substitute in this one, work done is already given for me 5 into 10 to the power of minus 3 divided by, यहाँ जो भी आएगा ये वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the surface tension। I'm leaving that calculation for you, please try to do it out। Direct formula based है। फिल्म बोला है तो सोप सॉल्यूशन बेटा, it has two surface areas। Next one, 18th one, the correct correlation between the escape velocity and orbital and Earth's surface and orbital velocity of the satellite orbiting close to the surface of the Earth will be equal to, ये तो आप लोग आराम से बोल सकते हो। Escape velocity is equals to कितना बेटा? Root 2 times of orbital velocity। याद है फॉर्मूला? Escape velocity is under root of 2g into r, orbital velocity is equals to under root of g into r। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया? root 2 into root of g into r, यानी escape velocity is equals to root 2 times of your orbital velocity। Second option। Question number 19, two wires of same material and same length but diameters in the ratio 1:2 are stretched by the same load, the ratio of elastic potential energy per unit volume for the wires will be equal to your how much value? Elasticity में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? याद है आप लोगों को? एनर्जी इज इक्वल्स टू योर हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ठीक है ना? Or else I can even rearrange this one and write U is equals to half into, this will become for me stress whole square divided by your y। पर यूनिट वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पर हो गया into 1, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा? स्ट्रेस का होल स्क्वायर। एंड हाउ स्ट्रेस इज रिलेटेड बेटा? स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, यानी स्ट्रेस इज inversely proportional to area। Then energy is directly proportional to stress and stress is inversely proportional to area, यानी U1 by your U2 will be equal to your D2 divided by D1 to the power of your 4। area मतलब पाई r स्क्वायर ना, उसका स्क्वायर लिख रहा है। Then सर हाँ बोलो। डायरेक्ट वॉल्यूम से भी ले सकते हैं ना सर, मतलब नहीं कन्वर्ट कर? क्या वॉल्यूम से लिख सकते? एरिया इनटू वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ क्या करोगे? तो वॉल्यूम है ना। पूछ रहा क्या हूँ? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना। यस सर, मतलब फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखा उससे एरिया वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ लिख। तो ये तो वैल्यू पूरा एक दे दिया ना बेटा, 1 दे दिया ना आपको, पर यूनिट वॉल्यूम बोला है ना, फिर एरिया इनटू लेंथ का ही लिखोगे।
यस सर। पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, तो एरिया को वॉल्यूम का मतलब ऑलरेडी यू हो गया ना बेटा, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा यू इज इक्वल हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन नहीं दिया, isn't it? He has given me the diameters. How it is related to diameter? Strain I'm converting into stress. Strain is equals to your stress divided by y. तो stress का whole square हो गया, तो energy is directly proportional to stress square. Now stress is inversely proportional to area. Area मतलब pi into r square to diameter. तो ये क्या हो जाएगा? U1 by U2 is equals to T2 by D1 to the power of 4. कितना आ रहा देख लीजिए। D2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 to the power of 4 divided by 1 to the power of 4 1, यानी 16 by 1, 16:1 आ जाएगा। आ गया? समझ लिया सर? हाँ, फर्स्ट वाले से भी करे तो सेम आंसर आया। सेम आंसर आता होगा, लेकिन प्रैक्टिकली तो रॉन्ग है ना बेटा। इसने पूछा क्या? रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं देता था, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ लिखते, और निकालना यस सर, क्या आपको? राइट। एनर्जी का रिलेशन है ना बेटा। अब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर राइट नाउ। एनर्जी इज इक्वल्स टू, आपने जब लिख रहे हो बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला यू इज इक्वल्स टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ। ये कब लिखोगे? जब आपको वॉल्यूम दे रखा होगा। तो इसका तो पूरा का पूरा वैल्यू उसने दे रखा है 1, यस सर। isn't it? चलो क्वेश्चन नंबर 20। सर टू द पावर ऑफ हाँ, 4 कैसा आ रहा है सर? अरे बेटा एरिया है ना बेटा, स्ट्रेस स्क्वायर है। एरिया मतलब क्या हो जाएगा? 1 by pi into r square ना। diameter is 2 times of your r, मतलब r is equal to how much वर्मी? d square ना। हाँ सर, डी स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रेस का स्क्वायर है ना बेटा। अच्छा ओके सर, स्ट्रेस का भी स्क्वायर है। ओके हाँ, स्ट्रेस का भी स्क्वायर है ना फॉर्मूला में। हाँ ओके सर, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 20। The ratio of energy radiated by two metallic spheres of radii r and 2r which are in the temperatures of 2T and T will be equal to how much? ये बताइए जल्दी से, आप लोग को आना चाहिए। The ratio of energy radiated by two metallic spheres of radii r and 2r. Energy radiated का फॉर्मूला क्या है बेटा? E is equals to, फॉर्मूला याद है? Energy radiated E is equals to sigma into A into T power 4 into T, energy radiated per unit time, यानी E1 by E2 is equals to directly proportional to यहाँ पर एरिया मतलब 4 pi into r square ना बेटा स्फीयर के लिए, तो it is directly proportional to r square, यानी r1 square divided by r2 square into temperature is T1 to the power of 4 divided by T2 to the power of 4। आ गया? एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस दे रखा है, तो एरिया ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू 4 pi into r square। तो एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल्स टू योर सिग्मा इनटू ए इनटू टी पावर 4 इनटू टी। सिग्मा इज योर स्टीफेंस कांस्टेंट। डन? समझ लिया? यस सर। चलो 21 आया किसी को? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। For a given gas 20 का 1 आ रहा था, देखो आया किसी को? For a given gas at 1 atmospheric pressure, RMS speed of the molecule is 200 meter per second at 127 degrees Celsius. At 2 atmospheric pressure, it is 227 degrees Celsius temperature. The RMS speed of the molecules will be equal to how much? VRMS का फॉर्मूला क्या है बेटा? VRMS is equals to under root of your 3R into T divided by capital. So VRMS is directly proportional to VRMS is directly proportional to root of your T. इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा बेटा? T1 is equals to 127 plus 273 आया? That will be equal to how much? 400 Kelvin. T2 will be equal to 227 plus of your 273, that will be equal to 500 Kelvin. So I can write here V1 by V2 is equals to under root of your T1 divided by your T2. तो अपने को V2 निकालना, तो V2 is equals to this one is V1, this will be equal to your under root of your, कितना आ जाएगा बेटा?
अंडर रूट ऑफ योर T2 डिवाइडेड बाई T1. सो V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 इंटू अंडर रूट ऑफ योर T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 500 डिवाइडेड बाई 400 यानी दिस विल बी इक्वल टू 2 चले जाएंगे. So this is your 200 into this will be root 5. Root 4 is nothing but 2. 2 ones are, this one is 200s are. So you get 100 into root 5 meter per second. So first option will be the answer. Chaliye. Question number 25. The relaxation time for the collision of the electron within ions in the conduction wire is 16.2 into 10 power minus 12 seconds. The mobility of the electron inside the conductor will be equal to your how much? बताइए. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है. करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1 से 4 बार आप लोग कर चुके हो. मोबिलिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? Mobility is equals to charge of electron relaxation time divided by your F. Charge of electron अपने को मालूम है 1.6 into 10 to the power of your minus 19. Relaxation time भी दे रखा है, mass of electron भी दे रखा है. Just simplify कर लो, that will give me the answer. एक सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है बेटा इस पे. Charge of your electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19. ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में. Then relaxation time is given how much for me beta 16.2 into 10 to the power of minus 12 divided by mass. Mass की वैल्यू कितनी है? Mass of your electron will be equal to how much beta 9.1 into 10 to the power of minus 31. Simplify कर लीजिए. सर. हाँ बेटा. सर 24th वाले का एक बार आप बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट ऑफ योर P दे रखा है बेसिकली इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम. Is it in a uniform electric field, the work done in rotating to it an unstable equilibrium position very slowly will be equal to how much? Work done will be equal to final energy minus initial energy. डाइपोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए? स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कितना 180. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब राइट नाउ फॉर मी 0. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की जब होगा तो θ1 is equals to 0 degrees and it is an unstable equilibrium मतलब θ2 will be equal to 180 degrees. इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है याद है? U is equals to your PE into your cos θ. minus cos θ1. हाँ तो ये लिख दीजिए राइट नाउ यहाँ पर. तो ये हो गया मेरे पास U final is equals to minus of PE into your cos of your 180 minus this will be equal to minus, ये minus में होगा ना, so this will be equal to your minus PE into your cos of your 0. तो cos 180 is minus, ये minus 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 मतलब ये प्लस हो जाएगा प्लस PE minus minus ये भी प्लस हो जाएगा cos 0 is 1 PE मतलब that will be 2 times of PE बनेगा बेटा प्लस 2 times of PE. आ गया? Yes sir. चलो 25 आप कैलकुलेशन कर लीजिए, छोड़ दे रहा हूँ मैं, आप लोग कर लीजिए. Then question number 29. Moon is observed by an astronomical refracting telescope in a normal adjustment condition having an objective of focal length 12 meters and eyepiece of focal length 1.5 meter. The incorrect statement among the following is: distance between objective and eyepiece is 12.05, angular magnification is 1800, 800, objective is larger than of your eyepiece. Objective is larger than of your eyepiece, that is correct. Image of the moon is erect, ये wrong है बेटा. Image of the moon will be equal to or inverted होना चाहिए बेसिक. Astronomical telescope में image is formed by this one is right now for me inverted, isn't it? So image of the moon is correct बोला, तो उसने क्या बोला? Incorrect statement बोल रहा, ये तो correct नहीं है ना. So fourth option will be the answer. Distance between objective and eyepiece मतलब length of the telescope मतलब f0 plus fe मैंने आपको लिखवाया था बेसिकली 12 plus this will be equal to मुझे meters में ही centimeters में थोड़ा ध्यान दे लेना. So it will be 1.5 into 10 to the power of minus 2 यानी that will be equal to 12 plus 0.015 यानी this will be equal to 12.015 meters. So that will be the first one. First one is correct. Angular magnification better. Angular magnification means image formed by the image divided by object यानी 1200 divided by 1.5 f0 divided by fe. Formula f0 divided by your fe.
सिंप्लीफाई कर लीजिए, that will give me the answer for that. 1.5 मतलब 3/2, 1200 divided by 3/2 into 12. 4 to 8 यानी 800 आ जाएगा. So 800. This is also correct. Objective lens is larger than eyepiece. ये भी correct है. तो image of the moon is erect. This is actually inverted आना चाहिए था. Erect दे रखा. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? Fourth option will be the answer. Incorrect पूछा है ना, तो that is the reason we are writing that answer. 30. Two coherent waves having the amplitudes in the ratio of 2:1 interfere. The value of I max minus I minima divided by I max plus of your I minima. Direct question है बेटा, isn't it? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? I max को आप divide कर लीजिए by your I max. So that will be equal to how much for your I max by your I minima minus of your I max divided by your I minima. I max divided by your I minima minus I minima cancel कर लो 1 divided by I max divided by I minima. This will be plus 1. Problem में क्या रखा है? Two coherent waves have an amplitudes in the ratio that is nothing but 2:1. Amplitudes are directly proportional. Intensity is directly proportional to the square of the amplitude बेटा. तो फर्स्ट वाले का अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 + 1 का होल स्क्वायर I max, isn't it? This will be equal to minus divided by 2 + 1 का whole square. This is also minus 1. And that will be equal to how much for me? 2 + 1 is nothing but 3. 3 square is nothing but 9. 9 minus 1 is nothing but 8. Divided by this one is right now how much for me beta? 2 + 1 is 3. 3 square is nothing but 9. This will be equal to plus. That will be equal to 9 + 1. That will be equal to 10. And then this will be equal to 4/5. 4:5 will be the answer. Because intensity is directly proportional to the square of amplitude beta. तो I max जब लिख रहे हो that will be equal to your A1 plus A2 का whole square. ठीक है ना? चलो. Question number 31. 31 the direct question है. I hope everyone might have been done with respect to that condition. Photocell converts what beta? Photoelectric effect में क्या होता है? Light energy is been converting into your electrical energy. So light energy has been converting into your electrical energy. Directly question. The shortest wavelength of the Balmer series of helium plus ion will be equal to your how much Fermi? Shortest series of the Balmer series मतलब what is the given condition बेटा? 1/λ, 3/7r, 2/r, 4/3r. आया किसी को ये क्वेश्चन? 1/r आ रहा है लैम्बडा मिनिमम. आया बेटा? 1/r. Very good. I'm not doing this one. This is a direct question. I hope you can do that one. Question number 33. According to classification of the solids on the basis of the energy bands, the solid is classified as the semiconductor. The energy gap between the valency band and conduction band. Kitna? For classification of solids on the basis of energy band, the solid is classified as a semiconductor if the energy gap is lesser than 3 electron volt. अगर energy gap 0 होगा, that will be called as what? Conductors. Energy gap if it is greater than 3 electron volt, that will be called as of what? Insulators. If energy gap is lesser than 3 electron volt, that will be called as semiconductors. Sure. Then question number 37. A diatomic gas is being enclosed in a chamber of volume V at a pressure P0. The internal energy of the gas will be equal to your how much? Internal energy का फॉर्मूला क्या है बेटा? U is equals to N into CV into delta T. कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं बेसिकली इसमें? Number of moles कितने हैं बेटा? Diatomic gas is enclosed in a chamber of a volume V at a pressure P0. The internal energy of the gas will be equal to how much? So I don't know. So I'm writing it as of your N. CV will be equal to your how much for me बेटा? Diatomic gas के लिए 5R divided by your 2, isn't it? Into delta T is nothing but equal to your T. This will be equal to 5/2 NR into your T. So this will be equal to 5/2 NR into delta T is work done. NA P into V. This will be equal to 4. Very good. The next one is question number 48. In YDSC, laser light of wavelength 5800 angstroms is incident on a pair of incident slits, produces an interference pattern
but dark fringes are separated by 7.25 mm. If another laser light produces the interference pattern where the bright fringes have been separated by 5.075 mm, then the wavelength of the second line will be equal to your how much for the given condition. Fringe width का formula क्या होता है बताइए फिर. Fringe width is equals to lambda into capital D divided by small d. Small d is the distance between the slits, capital D is the distance between the screen and the slit, and the lambda is the wavelength of the light used. First one के लिए wavelength, the fringe width is given as 7.25, wavelength is given as 5800 into capital D divided by small d, isn't it? Second one के लिए कितना दे रखा है बेटा? Distance is 5.075. See the question. Or next wavelength is given how much for me? 5000 angstroms का relation है right now. What is the next wavelength right now? We don't know. That is lambda 2 into capital D divided by small d. So this is my equation number 1 and this is my equation number 2. ये दो और ये दो वैसे भी चले जाएंगे. So it is lambda 2 will be equal to how much for? Lambda 2 is equal to 5.075 divided by 7.25 into this one is 5800 angstroms. Simplify कर लीजिए, that will give me the answer. I'm giving the calculation for you. The half-life of the radioactive nucleus is 40 hours. The fraction of original activity that remains after 80 hours will be equal to how much? बताइए 80 hours मतलब कितने half-life होगा बेटा? Half-life of the radioactive element is already T half. T half is equals to your 40 hours. Isn't it? 80 hours के बाद कितना हो जाएगा बेटा? 80 hours के बाद कितना हो जाएगा? यानी T 2 half-lives हो जाएंगे ना? Isn't it? 80 hours मतलब 2 half-lives. यानी A0 is becoming in first half-life A0 by 2 40 hours में. फिर next 40 hours में this A0 by 2 is becoming A0 by 4. Isn't it? So fraction of the activity that remains will be equal to how much better? A0 divided by 4 into your original activity A0, that will be equal to 1 by 4. Then third option will be the answer. 50. The potential energy of the electron in the helium plus ion in the first excited state is to be 0. The potential energy of the electron in the ground state will be equal to how much? Potential energy of the helium plus ion in the first excited मतलब क्या हो जाएगा बेटा? N is equals to 0. N is equals to 0 ground state, N is equals to 1 first excited state. हाँ बोलो. N equals to 2. हाँ. N is equals to 1. N is equals to 2, N is equals to 3. This is your ground state, this is your first excited state, this is your second excited state. First excited state मतलब N is equals to 2. What element is this one right now? Helium plus. यानी Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. So total energy का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 13.6 divided by n square into z square. तो कितना हो जाएगा? Minus of 13.6 divided by n is nothing but 2 square. 2 square is nothing but 4 into this one is atomic number of helium is nothing but 2. 2 into 2 that is nothing but 4. ये वाला चला गया. So this value will become how much? Minus 13.6 electron volt is the amount of energy. The potential energy of the electron in the ground state will be equal to how much? First excited state के लिए इतनी है, तो ground state के लिए कितनी हो जाएगी? बताइए. Ground state के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा. Isn't it? For ground state, total energy will be equal to minus 13.6 into z square is nothing but 4. N value is nothing but 1. And 13.6 into 2. Then कितना आ रहा है बेटा? 54.4 सर. First option आ रहा है. 27.2 electron volt आ रहा है. Yes sir. सर सेकंड ऑप्शन Minus 27.2 electron volt. The potential energy of an electron in the helium plus ion in the first excited state is to be taken as 0 बोल रहा है. He is asking us to take this energy to be equal to 0. देखो एक बार. Sir. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो मतलब n is equals to 2 की वैल्यू जो रहती है सर ऑर्बिट में.
थर्ड ऑप्शन बोल रहा है -54.5। और कुछ? सर -81.6 दे रखा है। Potential energy of the electron of the hydrogen gas in the first excited state of the atom is taken as 0. Potential energy of the electron in the second. So total energy कितना है मेरे को right now? Total energy in the first excited state is -13.6. Potential energy का फॉर्मूला क्या है बेटा? Potential energy का फॉर्मूला क्या है? Potential energy of your first excited state will be equal to -13.6 into 2. Now this will be -27.2 electron volt. Is asking to take this potential energy to be equal to 0. Yani potential energy in the ground state will be equal to 2 times of -13.6 into 2 square. That is nothing but 4. 4 to the 8. That is 8 into this one is -13.6. This will be -108.8 electron. तो न्यू पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाउ मच? अगर जब 0 दे रहे हो तो इतनी एनर्जी अब इसको 0 करना है, मतलब आपको कितनी एनर्जी देना पड़ेगा? +27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी इसको 0 करने के लिए यानी -108.8 प्लस दिस विल बी 27.2 यानी दैट विल बी इक्वल टू योर -81.6 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। The potential energy of the electron in helium plus ion in the first excited state is taken as 0 बोल रहा है। फर्स्ट एक्साइटेशन एक्चुअली कितनी है मेरे को? -27.2 आएगा, तो उसको मुझे कितना ऐड करें तो 0 बनेगा? +27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऐड करो तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज बिकमिंग 0। So what is the potential energy of the ground electron in the ground state? In the ground state में अगर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली तो that will be equal to how much? Excited state में 2 into -13.6 into your 4, so this is -108.8. उसमें से वैल्यू निकाल दो 27.2 को, that is 81.6. ग्राउंड स्टेट में एक्चुअली 108 रहेगा, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी अपन प्लस दे रहे हैं ना, तो उसको ऐड करना पड़ेगा so that the energy is not what do you call that, law of conservation of energy को वायलेट ना करे। सर हाँ बेटा, वो -13.6 जो आप मतलब याद कर लो बोले तो वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए रहती ना सर? हाइड्रोजन that is एटम only for hydrogen like atom। ये था तो नहीं देना चाहिए क्योंकि एकदम खतरनाक क्वेश्चन है ये, तो लेवल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है बेसिकली। अगर मैक्सिमम दिया तो एक दो बच्चा भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक क्लास के। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ऑलरेडी क्लास में एक दो बार प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में मतलब नहीं होगा। देखो मैं फिर एक बार बता देता हूँ, देखो हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को समझो पहले। So I'm writing the excitations. N is equals to 1, N is equals to 2, N is equals to 3. This is your ground state.
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इसने क्या बोला, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हीलियम प्लस आयन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज टू बी टेकन एज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेशन को आप एनर्जी 0 लेना है। तो मुझे पहले ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दैट विल बी इक्वल टू -13.6 into 2, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट will be equal to -13.6 into z square divided by n square। तो ये कितना हो गया, -13.6, एटॉमिक नंबर इज 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दैट मींस ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 स्क्वायर, ये वाला चला गया, तो -13.6। So total energy will be, potential energy will be equal to your total energy into its atomic number। तो ये कितना आ रहा है मेरे को, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको 0 करने के लिए आपको कितनी एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, +27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड कर दो, तो ये 0 बन जाएगा, isn't it? अब ना क्या होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट में कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट को मैंने 0 कर दिया, तो देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इन योर ग्राउंड स्टेट विल बी इक्वल टू योर 2 times of your total energy, that is nothing but -13.6 divided by your first excitation state, 2 square is 1 into z square, z square is nothing but equal to how much for me, 2 square, मतलब that will be equal to 4 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज -108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हो, लेकिन ऑलरेडी आपने इतनी एनर्जी ऐड किया हुआ है, तो इसकी भी उतनी एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, सो दैट इट विल बिकम स्टेबल। So it is a +27.2 electron volt add कर दीजिए, so that will come out for me -81.6 electron। आ गया, गुड क्वेश्चन। डन, चलो अब एक बार आप आराम से पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोलते हो, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्म में एक बार रिवाइज कर लेके फिर एक बार क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, ठीक है।